Hi guys, I made this video to unbox Apple 20 watt power adapter USB Type C and to answer most asked question, how can we check if the adapter is original or not? Since you can check via serial number directly from the Apple site if it is original or fake one. But in the case of USB Type C or any adapter you see take a wire, that was hard to get if it is original or not. ये आपको सिर्फ शॉपकीपर ही बता सकते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि जब भी आप अगर फेक आईफोन का अडाप्टर लीजिएगा इट लुक सिमिलर, टोटली सिमिलर टू दिस वन. आपको ये प्रिंटिंग क्वालिटी बारकोड everything each and everything whatever they copy, it will be similar to the original one. So it's very hard to find out whether it is fake one or original one. But still आप ये तो तभी पता चल पाएगा जब अडाप्टर आपका ख़राब होगा, और when you go to the store and get to know replace, so they will tell you if it is original or not. But still I suggest you to buy it from a premium reseller or directly from the Apple site. I strongly recommend this since मार्केट में बहुत सारे फेक एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ में USB adapters and everything. So I have a 5 watt adapter which I was using earlier in my old iPhone, and now we have a new 20 watt adapter which is much more faster compared to the old adapter. ये पुराने अडाप्टर आपको अराउंड 2 से 2.5 घंटे या कभी कभी 3 घंटे लेते हैं चार्ज करने पे, डिपेंड्स अपॉन यूर स्टार्टिंग फ्रॉम 1% और 5%. बट इफ़ यू टेक अ न्यू अडाप्टर इट I think hardly take 30 minutes to reach you 80%. That is a big difference you see from the old adapter to the new adapter. So let's get unboxing. So unboxing से पहले से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी नया एप्पल प्रोडक्ट लेते हैं या फिर अडाप्टर लेते हैं, कोई भी लेते हैं, अगर इनका कोई भी प्रोडक्ट एक प्रॉपर सील के साथ आता है. आप इसमें अभी नहीं देख पा रहे क्योंकि आई हैव ओपनड इट ऑलरेडी. नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी एप्पल प्रोडक्ट कर दूंगा तो आई विल स्टार्ट मेकिंग द वीडियो फ्रॉम इनिशियल, बट दिस विल कम विथ अ सील्ड वन वेयर यू कैन नीड टू टीयर इट, और इस तरह का एक डिफरेंस आपको दिखेगा. ये प्लास्टिक आपका आधे टुकड़े में टूट जाता है. अब इसे मैं ओपन करता हूँ. वंस यू ओपन, बीच में हमें एक अडैप्टर मिला है और साथ में मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिले हैं. इस डॉक्यूमेंटेशन में आई थिंक वारंटी कार्ड है, यस, एंड ये हमारा पावर अडाप्टर का गाइड बुक है. सो लेट्स कीप इट असाइड, वी डोंट नीड दैट. और ये हमारा अडाप्टर. ये अडाप्टर का साइज़ इफ़ यू कंपेयर विद द प्रीवियस वन, ये थोड़ा बड़ा है, और साइज़ में वेट में भी ये थोड़ा heavy है compared to the previous one. Let's remove this plastic cover. Yeah, this is type C, and if you compare with the previous one, this is USB type C. इन्होंने एकदम मिडिल में दिया है, जो कि आपको पुराने ओल्ड 5 वाट अडेप्टर में ये थोड़ा ऊपर आपको मिलेगा, ये मिडिल में नहीं है. Compared to originality, you see a Apple logo here also. In fake one, I don't think this quality you will see in the fake one. And the font size, the color, all these things may vary from fake one to original one. So ये original है, इसलिए ये आपको बिल्ड क्वालिटी इसका आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट. अगर डुप्लीकेट होगा तो आपको वेट में लाइट रहेगा. नॉट श्योर वेदर, आजकल इतना अच्छे फेक प्रोडक्ट्स आ गए हैं एप्पल के कि आपको बताना मुश्किल है कि ये एक ओरिजिनल है या कौन सा रियल है. So that's all. This is the unboxing. I'll show you in the next video like how the comparison detail level में क्या किस वॉचेस कितने देर में चार्ज होते हैं, आपके फ़ोन कितने देर में चार्ज है. तो आई हैव XR 11, 12 and 12, 13 Pro. So all this, how much it will take time. So wait for the next video. Thank you so much guys.